In this video, we will study this Act 1, Scene 2 of Julius Caesar in details. So in this scene, we find that Julius Caesar, along with his followers and his friend Antonio, Calpurnia, Portia, Decius, Brutus. So Caesar is passing through a public place. So Caesar is calling his, if you have the book, I request you, please take out the book. अगर आपके पास book है, तो आप बुक को निकाल के लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा. विल अंडरस्टैंड बेटर. इफ यू हैव द बुक, प्लीज टेक इट आउट, पॉज द वीडियो एंड टेक आउट द बुक. So Caesar is calling his wife, Calpurnia. Okay. So Casca, there's a lot of crowd. So Casca is saying, please, please keep quiet, keep quiet. Caesar speaks. Caesar is again calling his wife, Calpurnia. Calpurnia is saying, yes, my lord. Yes, my lord. Caesar is saying to his wife, Caesar is saying this to his wife in the streets of Rome. There's a lots of procession going on. बहुत भीड़ भाड़ है. Caesar is saying this to his wife. Caesar ये अपने wife को बोल रहा है. Stand directly in Antonio's way, and when he runs his course. So there is a feast going on, and in that feast there are some people who participate in a holy race, and when they run, and some women stand on the path. So these are the women who are barren, who are unable to give birth to a child. So elders believe, यहाँ आगे लिखा है, रोम में ये लोग विश्वास करते थे कि अगर कोई इनको मतलब barren women को टच कर दे तो वो फर्टाइल हो जाएंगे. They will be able to give birth to a child. So रोम में लोग ये मानते थे कि जो औरत को प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं because of some gynecological issues, so they believed that there is some kind of divine problem with this woman. So उनका ये मानना था कि ये रेस में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अगर ये उस वुमेन लोग को छू दे तो ये barren women लोग वो लोग फर्टाइल हो जाएंगे. They will be able to give birth to the child. Now Caesar is saying to his wife that Caesar's wife Calpurnia is also not able to give birth to a child. Caesar's wife Calpurnia जो है, she is not also able to become fertile. So Caesar is saying to his wife, Calpurnia, stand directly in Antonio's way, and when he runs his course, मतलब जब एंटोनियो दौड़ेगा तो तुम रास्ते में खड़े हो जाना एंटोनियो के, ताकि एंटोनियो तुमको छू ले, and as a result of which you will become fertile and Caesar will have a child. So उस रेस में पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो एंटोनियो है, along with many other people. और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यंग मैन है जो इस रेस में दौड़ेंगे. उसी पार्टिसिपेंट में एक आदमी है, उसका नाम है एंटनी. So Antony is saying to Caesar, Caesar, my lord. So Caesar is reminding his friend, your race में participant है, forget not in your speed, Antonio, to touch California. Caesar is saying to his best friend, or Caesar is saying to his friend Antonio, Antony, that Antony, जब तुम रेस में दौड़ोगे तो भूलना मत मेरे वाइफ को. डोंट फॉरगेट माय वाइफ कैलिफोर्निया, क्योंकि एल्डर्स लोग का ये मानना है कि जब कोई when a barren woman, मतलब a woman is not able to give birth to a child, who is not able to conceive a child, who is not able to become pregnant because of some issues. So elders लोग का ये मानना है कि barren women लोग, if they are touched in this holy chase मतलब रेस, मतलब इस रेस में अगर कोई रेस के पार्टिसिपेंट जो है किसी barren woman को टच कर दे, it shakes off the sterile cause, तो उनका जो barrenness है वो हट जाएगा. वो infertility will change and they will become fertile. It will shake off sterile cause. Sterile मतलब होता barren. वो जो barren का कारण है वो कारण हट जाएगा, and they become, and they can have a child. They can conceive a child. They can give birth to a child. So Caesar is saying to his friend Antony, उसी को Antonius लिखा हुआ है, कि Antony, when you are running in the race, do not forget when you are speed in running to touch Calpurnia. Calpurnia को touch करना है मेरी वाइफ, Caesar's के वाइफ को. For elders से रोम में ये बड़े लोग बोलते हैं क्या,
कि when barren women are touched in the holy chase, the sake of मतलब they remove their barrenness. Sterile cause मतलब barrenness. Antony is saying, yes sir, I shall remember. When Caesar said do this, it is performed. Antony Caesar को बोल रहा है, yes sir, आप जो बोलिएगा हो जाएगा. When you say it is done, it is performed. Caesar is saying, set on and leave no ceremony out. Caesar is saying, okay, get ready, रेस चालू करो और कोई भी सेरेमनी में कोई भी रिचुअल्स भूलना मत. तो इतने में वो भोबू बज रहा है, बामुल मतलब जो मूवीज में बजता है. सीजर इज कमिंग, बामुल आजा होशियार, सीजर आ रहे हैं. So this kind of instrument, trumpet is being blown. So Caesar is passing by. So a soothsayer, a fortune teller, एक पंडित, एक फ्यूचर बताने वाला चिल्ला रहा है, Caesar. Caesar is saying, who calls? Casca is saying, sir, let every noise be stopped. Peace be again. बहुत भीड़ है. तो Casca is saying to everybody, bid every noise be still. हर कोई चुप हो जाओ. Peace मतलब keep quiet once more. Caesar is saying, who is that calls me? Caesar is saying, इस भीड़ में कौन हमको बुला रहा है? I hear a tongue shriller than all music. Caesar is saying, I can hear a voice which is more powerful than any other music here, any other voice, any other and vocal tone. Caesar is saying, किसका ये voice है जो सबसे ज्यादा तीखा है, उसको आगे बुलाओ. कौन है जो चिल्ला रहा? Caesar. Speak. Caesar is turned to hear. When Caesar is ready to hear. तो सीजर बोल रहा है कि कौन इस भीड़ में मेरा नाम चिल्ला रहा है, जो इतने श्रील वॉइस में, इतने अजीबो गरीब वॉइस में मेरा नाम जो चिल्ला रहा है. सीजर कौन है? हम सुनने के लिए तैयार है, बोलो क्या बोल रहे हो. सो सीजर का नाम कोई चिल्लाया. सीजर इज सेइंग टू दैट पर्सन कि कौन है, सामने आओ. कौन है चिल्ला रहा है? सीजर. जो भी है सामने लाओ. एंड आई एम रेडी टू लिसन. से सूथसेयर मतलब वही फॉर्चून टेलर बोल रहा है, बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च. सूथसेयर एक अजीब गरीब पंडित टाइप आदमी है. इज सेइंग कि 15 मार्च से आप होशियार रहिए. 15 March is the Ides of March in Rome. It's a festival. So Caesar is saying, Caesar को बताया जा रहा है, सूथसेयर बोल रहा है कि 15 मार्च को कुछ होने वाला है, तो आप 15 मार्च से होशियार रहिए. Who is this? Caesar is saying, ये कौन है ये जो Ides of March बोल रहा है? कौन है? Brutus is saying, Brutus Caesar का फ्रेंड है. So Brutus is saying, a soothsayer bids you Ides of March. So Brutus is saying कि एक soothsayer आपको ये बता रहा है कि आप Ides of March से होशियार रहिए. ना Ides of March के दिन कुछ डेंजर होने वाला है, so उससे आप होशियार रहिए. Brutus is saying to soothsayer, beware the Ides of March. मतलब आप इस दिन से होशियार रहिए, something may happen to you. Caesar is saying, set him up. Let me see his face. Caesar बोला, एक बार इसको सामने लाओ तो चेहरा देखे, जो हमको बोल रहा था, beware the Ides of March. Cassius is saying to everybody, fellow, come from the throng. भीड़ से सामने आओ. Let me. Caesar wants to have a look on you. So बहुत भीड़ था, सूथसेयर दूर था. Cassius is saying, सूथसेयर सामने आओ. Julius Caesar wants to see your face. What say to me now? Speak once more. Caesar is saying to सूथसेयर, एक बार फिर से बोलो, क्या बोलना है तुमको? सूथसेयर बोल रहा, beware the Ides of March. मतलब 15 मार्च से होशियार रहिए. Caesar is saying, oh, he is a dreamer. Let us leave him, pass. Caesar is saying, इसको छोड़ो, चलो हम लोग सब चलते. He is a dreamer है, पियक्कड़ टाइप आदमी है, ड्रंकर्ड है. So all gone. सब कोई सीजर के सब फॉलोअर्स लोग, ये जो कैलिफोर्निया और एंटनी जो रेस में, तो सब चले गए, सब लोग चले गए. All gone, all senators gone, extinct मतलब gone, go स्टेज से लोग हट गए, मतलब दूर चले गए. And now on the stage there are only two people. It's a play performed on the stage. So on the stage there are only two people, Brutus and Cassius. Cassius is saying to Brutus, these are all the members of parliament called senators. Senate, ये senate में रहने वाले लोग हैं, जैसे parliament में MLA, MP वो सब होता है वैसे. So Cassius is one of the member of Senate. Brutus is also a member of Senate. Casca, Cassius is a member of Senate. So Cassius is saying to Brutus, will you go to see the order of march?
ऑर्डर ऑफ दिस कोर्स मीन्स सॉरी, ये जो प्रोसेसर निकला फीस्ट ऑफ लुपर्कल का, जिसमें कैलिफोर्निया को टच किया जाएगा, कैसियस इज आस्किंग ब्रूटस विल यू गो टू सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स, मतलब आगे जो ये प्रोसेशन जाएगा क्या आप उसको देखने जाइएगा? ब्रूटस सेइंग नो नॉट आई, हम देखेंगे। आई प्रे यू डू, कैसियस बोल रहा आप जाइए, आप भी देख के आइए। ब्रूटस इज सेइंग आई एम नॉट सो गेमसम, आई लैक सम part, the spirit that is in Antonio. Brutus is saying, I do not watch all these games and I do not have that enthusiasm, that stamina, that readily available energy to go along with people. मतलब इतना भागा दौड़ी करने का मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, so हम नहीं जाएंगे. So Brutus is not willing to go in the procession in which Julius Caesar has gone, and all those people who are running the race, who Antony will touch California. Brutus and Cassius, they are not going into the race. Brutus और Cassius अभी स्टेज में अकेले, परफॉर्म जहां हो रहा है वहां अकेले. So Brutus saying, I am not some game some, मतलब I am not interested in all these spirits of game. I do lack some part, मतलब lack some quality of the quick spirit that is in Antonio. So Brutus is saying कि एंटनी के अंदर जो स्पिरिटेडनेस है, जो भाग दौड़ी का हिम्मत का एनर्जी लेवल है, वो मेरे अंदर नहीं है. लेट मी नॉट हिंडर कैसियस योर डिजायर, आई लीव यू. ब्रूटस बोल रहा है कि तुम अगर जाना चाहते हो कैसियस, आई विल नॉट हिंडर, आई विल नॉट स्टॉप यू, यू गो एंड वॉच द गेम, द फीस्ट ऑफ लुपर्कल सेलिब्रेशन, आई विल नॉट स्टॉप यू. कैसियस, यू हैव योर डिजायर, तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारा डिजायर है तो तुम जाओ, आई लीव यू, मतलब हम तुमको इजाजत देते हैं, तुम जाओ. So Brutus is saying, I'm not interested in all this game. I lack some spirit. I lack some energy. I lack that quality, that spirit that is in Antonio. Antony. Antony has gone along with all those people who are running the race. So you go with Antony. Let me not stop you. अगर तुम जाना चाहते हो तुम जाओ. I will not stop you. Cassius. Cassius is saying this. Brutus, I do observe you of late. I have not from your eyes that gentleness, the show of love that I used to have. So Cassius is saying to Brutus कि Brutus, I have observed you. मैंने तुम पे ध्यान दिया है, observe किया है, notice किया है कि you do not have that gentleness. वो तुम्हारे चेहरे पे जो चमक, जो अपनापन, जो प्यार होता था, वो नहीं है. You do not show that show of love जो तुम पहले चेहरे पे अपने दोस्तों के लिए प्यार दिखाते थे, वो अब नहीं है. You have become too stubborn and too strange a hand. मतलब अब तुम्हारा चेहरा बहुत ही rude और rough है, and you are behaving very roughly towards your friend or your friend who loves you. So he's saying, Cassius is saying to Brutus that Brutus, of recent, मतलब recently I observe you. मैंने ध्यान दिया है कि कुछ दिन से तुम्हारे आंखों में जो वो अपनापन, वो सॉफ्टनेस, वो नॉर्मल लव फॉर योर फ्रेंड्स वो नहीं है. एंड द शो ऑफ लव दैट यू यूज्ड टू हैव, मतलब जो पहले तुम प्यार दिखाते थे अपने दोस्तों के लिए, वो नहीं है. यू बी आर टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेंज हैंड, अब तुम बहुत ही रफ हो गए हो और बहुत ही रूड हो गए अपने फ्रेंड्स लोग के लिए. Brutus. Cassius, be not deceived. Brutus is saying, sorry, Cassius, तुम धोखा मत खाओ. I have veiled my look. Veiled मैंने cover my face with some kind of roughness and rudeness, disturbance. I turn that countenance, मैंने face upon myself. So he's saying कि ये जो disturbance है, जो angry look है, ये जो anxious face है, ये सिर्फ मेरे लिए है, ये दोस्तों के लिए नहीं. So he's saying कि if I have become disturbed, if I have become rude, if my appearances have become a bit rough, it is all for myself. Vexed I am of late with the passion of some difference. So बोल रहा है कुछ दिन से हम vexed हो गए, मैंने disturbed हो गए. Of late, the passion of some difference, मतलब some kind of disturbing element is going in my mind, because of which Brutus is disturbed. So Brutus is saying to Cassius, Cassius, if my appearances have changed, if my countenance, my face has changed, it is only for myself. ये तुम लोगों दोस्तों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है. Vexed I am. He is saying I am troubled. Of late, मैंने recently, because of passion of some difference. मतलब some passion, some emotion, some disturbing ideas is playing in his head, because of which Brutus is disturbed. These conceptions are only proper to myself. So he's saying कि ये disturbance, ये anxious look, ये tensed, ये चिंता, ये सब मेरे लिए, which give me some soil perhaps to my behavior. But let not therefore my good friends be grieved. He is saying कि
अगर कुछ मेरे दोस्त अगर चिंतित हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये सब जो है उनके लिए नहीं है. दिस डिस्टर्बेंस इज ओनली फॉर माई सेल्फ. लेट नॉट माई फ्रेंड बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ माई चेंज इन लुक्स. सो ब्रूटस इज सेइंग टू कैसियस कि अगर my appearances have changed, my looks has changed, I've become tensed, I've become disturbed, it is only for myself, not for my friend. Among which number, Cassius, you be wrong? So he's saying, Cassius, you are one of my best friend, nor constitute any further my neglect. That Brutus war with himself. He's saying कि मेरे अंदर एक वॉर चल रहा है. ब्रूटस इज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रूटस. मतलब ब्रूटस के अंदर ब्रूटस में एक वॉर चल रहा है. He forgets the show of love to other men. So he's saying, I'm so disturbed because of my own self that I'm unable to show this love to my friends. This happens with most people, almost all people, bearing people who have mastered themselves. So here, Brutus is saying that there is some tension going on in his mind. There is some disturbance going on in his mind. There is an emotional war going in his mind. And because of which he is disturbed, but his friends should not misunderstand his disturbance as something of being rude or being indifferent or being careless or being lack of love. Now, this happens with most people. When you are very disturbed, when you are unable to take an important decision in your life, when you are unable to choose between this and that, or him or her, or this or that, this friend or that friend, this job or this that job. So we all have this dilemma of choosing one and leaving the other. And during that fight within ourselves, during that Kurukshetra that goes within ourselves, during that Mahabharat war that is going on within our mind and heart, we normally do not behave the same or look the same towards our fellow human being, parents, friends, and our loved ones. So Brutus is like most of us. So he's saying, I was disturbed because of something. There is a war going in my head, and because of which I'm unable to show my love to my friends. So Cassius is saying, then Brutus, I mistook your passion. So Brutus is saying, sorry. Cassius is saying to Brutus, sorry, bhai. मैंने तुम्हारे चेंजिंग अपीयरेंस को गलत समझ लिया. सो आई एम सॉरी. I mistook your passion. मतलब I misunderstood your emotional look on your face. By means whereof the breast of my had buried the great thought. So he's saying कि मेरे दिल में, heart में, chest में, there's lot of ideas here. Worthy cognitions. Important बात है. Tell me, good Brutus, can you see yourself? He's saying, अच्छा तुम Brutus ये बता, क्या तुम अपना चेहरा खुद से देख पाते हो? Brutus is saying, no, I cannot see itself, but with some reflection. Brutus is saying कि खुद का चेहरा कोई कैसे देख सकता है? या तो मिरर, या तो मोबाइल फोन, कुछ चाहिए, then you only can see yourself. So Cassius is saying, Brutus is saying, no, Cassius, I cannot see yourself. ऐसे एक बार रिवाइज कर देते हैं. So Cassius is saying कि I have lots of great thoughts in my mind which I want to discuss with you, but he says, Brutus, tell me, क्या तुम अपना चेहरा खुद से देख सकते हो बिना आईने के? Cassius is saying, Brutus is saying, no, Cassius. For the eyes cannot see itself, but by reflection, by other thing. ये मोबाइल का कैमरा होगा तो ही तो मैं अपना चेहरा देख पाऊंगा, या आईना या मिरर. So Brutus is saying, I can't see my own image, my own face until I have a mirror. Cass is saying it is true, it is just, and it is justified. It is very much lamented, Brutus, that you do not have a mirror that will show your own worthiness to you. So Cassius is saying, Brutus, तुम्हारे पास वो आईना नहीं है, वो आईना जो तुम्हारा ही गुड क्वालिटी और तुम्हारा ही इश्यूज तुमको बता पाए. Like the mirror tells me how I look, so Cassius is saying there should be an inner mirror who will tell your problem, your goodness, your evil quality, your strength, your weaknesses to you, your hidden worthiness into your eyes. So Cassius is saying, Brutus, तुम्हारे पास वो mirror नहीं है जो तुमको तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे आंखों में दिखा पाए, so that you may see your shadow, you may see your image. So Cassius is saying to Brutus that Brutus, you do not have the mirror in which you can see yourself, in which you can see your own image. I have heard whereof many of this best respect in Rome, except immortal Caesar, are groaning under this age yoke. Yoke means burden. Yoke means burden. So he's saying कि मैंने सुना है सब लोग सीजर को छोड़ के इस एज में एक बर्डन में है. So Cassius is trying to instigate Brutus
to kill Julius Caesar, but he cannot do it straightforward. जाके directly बोलेगा कि your best friend Julius Caesar को मार दो, so the idea will backfire. So he's saying कि मैंने सुना है, I have heard that many best person in Rome, अच्छे अच्छे लोग, respectable लोग, सब लोग, they are groaning, they are crying, they are expressing their pain. Why? Because they are under the burden of the problems, corruption, evil thing going on in Rome at that time. So here he is saying, कैसियस बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग, वो सब रो रहे हैं. क्यों रो रहे हैं? क्योंकि रोम के ऊपर एक योक आ गया. योक इज एक्चुअली गाय और बैल को कनेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रखा रहता है, जिससे द बुल एंड द कैरेज दे आर कनेक्टेड. बुल के ऊपर रहता है. सो इट्स अ बर्डन. इट मींस बर्डन. तो ही मींस टू से कि रोम जो है एक बर्डन में क्राई कर रहा है. एंड गुड पीपल ऑफ रोम आर क्राइंग फॉर दिस बर्डन. आई विश दैट नोबल ब्रूटस हैज हिज आईज. कैसे से सेइंग कि रोम में इतना परेशानी है, इतना ट्रबल है, इतना उलझन है, इतना क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्टर्बेंस है, पीपल आर सफरिंग एंड पीपल हैव नो वेल बीइंग एंड पीपल आर क्राइंग. आई विश ब्रूटस हैड एन आई. सो कैसियस इज सेइंग कि पूरा रोम जो है जूलियस सीजर के बर्डन से रो रहा है. आई काश ब्रूटस ये देख पाता. आई विश ब्रूटस हैड एन आई. मतलब ब्रूटस को भी ये एहसास होता, not these eye, but the sensitive eye which can see the problems of human being. Brutus is saying, Brutus का लाइन है, आप बुक फॉलो करते रहिए. In what danger would you lead me, Cassius, that you would speak me into myself that is not in me? Brutus is saying कि तुम कौन सा डेंजर बात बोलने जा रही हो? You're trying to show something in me that is not in me. You're trying to point out certain qualities in me that is not in me, Cassius. Therefore, good Brutus, be prepared to hear. And since you cannot see yourself, I will be your reflection. Cassius is saying, अगर तुमको अपना ही evil नहीं दिख पा रहा, अपना ही issue, अपना ही problem, goodness, strength, weakness नहीं दिख पा रहा है, so Cassius is saying, Brutus, सुनो, be prepared to hear. Since you cannot see yourself by reflection, I will be your class. He is saying, Cassius बोला Brutus को, अगर तुमको अपने आप तुम नहीं देख पा रहे हो बिना मिरर के, so हम ये मिरर बन जाएंगे Cassius, और तुम Brutus अपना fault, अपना goodness सब कुछ देख पाना. So Cassius wants to become the mirror for Brutus, so that Brutus can see his evil, good quality, problem, issue, doubt, disturbance, सब कुछ. So he's saying, Brutus, be prepared to hear. तुम सुनने के लिए तैयार हो जाओ. Since you cannot see yourself, तुम खुद का चेहरा तो नहीं देख पाते बिना मिरर के. So I, Cassius, will become the mirror for Brutus. I will be a glass. Glass है मतलब आईना, mirror. Will modestly, मतलब will sincerely discover, मैंने explain you to you. मतलब कैसियस मिरर बन के ब्रूटस का very sincerely, honestly, he will describe everything to Brutus, that which yourself do not know. Brutus is saying कि हो सकता है तुमको तुम्हारा बहुत सारा गुडनेस, अच्छाई, या इविल, या डाउट, या टेंशन, या कोई लैक जो तुमको नहीं पता है. आई विल टेल यू. बी नॉट जेलस जेंटल ब्रूटस, वेयर आई ए कॉमन मैन. बोल रहा जेंटल ब्रूटस, तुम हमसे डाउट मत करो, हम पे जेलस मत करो. So here, next 5 line में Cassius is giving certain qualities. He says that these are my qualities because of which you should accept my word honestly. You should trust my words. You should have believe that what I am going to say does not have an ulterior motive. So यहाँ Cassius बोल रहा है Brutus को कि I am not a common laughter. मैं जोकर लोग की तरह हंसता नहीं रहता हूँ. You do not see stale with my ordinary oaths सब लाभ, मतलब मैं झूठा कसम नहीं खाता हूँ. So Cassius is trying to say to Brutus कि Brutus, मैं हमेशा sincere हूँ, honest हूँ, trustworthy हूँ, and these are the points he gives to make himself trustworthy to Brutus. So he says, gentle Brutus, I am not a common laughter. झूठ मूठ हंसते वाले comedian नहीं हूँ. I do not stale my ordinary oath of love. मैं झूठ मूठ का कसम नहीं खाता हूँ. To win people's love, लोग बोलते ना कसम से तुम तो मेरे हो. So he says, I am not a joker and I do not take oath unnecessarily. मैं कसम, झूठा कसम नहीं खाता हूँ. Next. To every new protester में जो कोई भी लोग मिलता है उनके दिल जीतने के लिए मैं कसम नहीं खाता. You know
that I do fawn on men and hug them hard and afterwards scandal them? He says, do you have ever seen me? कि हम लोगों का क्रिटिसाइज करते फिर पीठ पीछे मैंने किसी का बुराई करते हैं. He's saying कि have you ever seen me that मैं लोगों को हक करता हूँ फिर उन्हीं का बुराई उनके पीछे करता है. Have you ever seen me, Brutus? Cassius is asking this. You have seen me that I'm not a joker. You have seen me that I do not take oath to every new person just to win their love. He says, you've never seen me that I hug people and afterward criticize them, scandal and say negative things about them. If you know I do process myself in banqueting to all the naughty, says, have you ever seen me where in a crowd and shouting, joking? Then you hold me dangerous. Cassius is saying that you have never seen me professing myself in a banquet party में राउट में crowd से हल्ला गुल्ली करते कभी तुमने देखा है Brutus? Cassius is asking Brutus, have you seen me making joke? Have you seen me taking oath? Have you seen me any criticizing people unnecessarily? Have you seen me that I hug people and then same people I scandal about, tell negative things about them? Have you seen me ever in a banquet shouting at people, enjoying, पी के बवाली करते? कभी तुमने हमको देखा? अगर देखा है then I'm dangerous. इतने में फिर से फ्लरी ट्रम्पेट बजा सेलिब्रेशन का. Brutus is saying, ये Brutus का लाइन है. What means this shouting? Brutus बोला इतना चिल्ला चिल्ली क्यों हो रहा है? I do fear Caesar has been made a king. He says people may choose Caesar for the king. Brutus बोल रहा हमको डर है कि Caesar king न बन जाए. By the way, Rome में there was democracy. There was a republican system like Indian democracy, a somewhat of democracy, मतलब Indian जैसा democracy, without going into details. But now Brutus is saying कि हमको डर है कि सीजर अब किंग बन जाएगा, एम्पिरर बन जाएगा. सो रोम में एम्पिरर नहीं थे उस वक्त तक. रोम में रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था. सेनेट थे, लोगों का अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. जैसे इंडियन डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में एमपी एमएलए होते, प्राइम मिनिस्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ब्रूटस इज सेइंग कि हमको डर है कि लोग सीजर को किंग बना देंगे. मतलब ब्रूटस को डर है. So Cassius is saying, you fear, that means you do not want him to become the king. Cassius अभी भड़का था, ब्रूटस के मुंह से निकल गया कि हमको डर है कि जूलियस सीजर को लोग किंग बना देंगे. तो Cassius is saying कि उनको डर है मतलब तुम चाहते नहीं थे. You did not want him to become king. You do not want him to become king. मतलब तुम चाहते नहीं हो कि जूलियस सीजर किंग बन जाए. Then I must think you do not want to have it. I do not want. Brutus is saying, no, I do not want that Julius Caesar should become the king of Rome. Cassius, yet I do love him. Cassius is saying that Julius Caesar is his best friend, so he loves Julius Caesar. But wherever do you hold me so long? Brutus is saying, हमको Cassius को ये बोल रहा है. Brutus is saying this to Cassius. Brutus is saying this to Cassius. Cassius, हम चाहते नहीं जूलियस सीजर किंग बने. Though I love Julius Caesar, but I do not want him to become the king, because king was an alien idea to Rome at that time. It was an idea that was against the very fabric of the society. लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे कि अब इंडिया में अचानक कोई किंग बन जाए. So this is against the very ethos of the country. We always have been democratic country. So here Brutus is saying, हम Julius Caesar को I love him, but I do not want him to become the king. But he's saying, Cassius, why are you holding me so long? इतने देर रोके क्यों हो? तुमको यहाँ जाने दो. What is that you impart to me? क्या कहना चाहते हो? What is that you want to say to me? If you ought anything towards the general cause, बोल रहा अगर कॉमन लोगों के भले के लिए, जनरल कॉज, जनरल पब्लिक के प्रॉफिट के लिए, I will set honor in one eye and death in the other. He's saying कि अगर कॉमन लोगों का बात है तो मरना भी पड़े तो I will die. मतलब He's saying कि एक आंख में ऑनर, एक आंख में डेथ. मतलब ऑनर बचाने के लिए अगर डेथ को भी फेस करना पड़े. So this Brutus will accept death for the benefit of common people. Brutus is willing to die for the common people. He's saying if ought man anything, it's towards the general good. आम पब्लिक के भलाई के लिए अगर ये है, so Brutus will die, but he will do things for the good of common people. I will look on both indifferently. He's saying death भी और ऑनर भी मेरे लिए दोनों को मैं इक्वली देखूंगा, दोनों को इनडिफरेंटली. मतलब इट्स नॉट दैट आई विल फेवर लाइफ ओवर
डिसऑनर। ही वांट्स टू से कि अगर कॉमन लोगों का बात है तो डेथ क्या, ऑनर क्या, मतलब आई विल रिस्क एवरीथिंग, मेरे लिए मौत भी इनसिग्निफिकेंट है, बट आई विल वैल्यू माई ऑनर ऑफ बीइंग ए रोमन, मेरे लिए रोम का इज्जत ज्यादा जरूरी है, अगर इसके लिए मरना भी पड़े तो आई विल डाई। आई विल लुक ऑन बोथ ऑफ देम इंडिफरेंटली, मेरे लिए सब बराबर है, मरना भी पड़े तो आई विल डाई, बट आई विल डू समथिंग फॉर द कॉज ऑफ रोम। But let the God be spared as I do love the name of honor more than I fear death. So he says God is there as a witness. कि हमको मरना भी पड़े तो मरेंगे, but I will maintain the dignity of my country, the honor of my country. Cassius saying, I know the virtue is in you. Cassius saying, को पता है तुम्हारे अंदर ये good quality है, quality of maintaining the honor of being a Roman. रोमन लोगों को रोमन होने पे एक बहुत प्राउड होता था, एक बहुत गर्व होता था, एक बहुत sense of achievement hota tha. So Cassius is saying, I know you are a very honorable man. Brutus, as I do know your outward favor, well, honor is the subject of my story. He's saying, को पता है कि तुम एक बहुत honorable man हो, and I know you from outside that you are very honorable. I know your character. So he's saying, honor ही तो हम जो बोलने जा रहे हैं, honor के, वो honor का ही topic है. I cannot tell you what you and other men think of it, but my single self, I had be willing not leave at all then be of such thing. He says कि हमको बाकी लोगों का पता नहीं है, लेकिन हम अपना बताएंगे. My single self, my own personal being, I would leave, मैंने willing, not leave at all, then be in awe of such a thing. He's saying कि हम willingly जिएंगे ही नहीं अगर हमको सीजर के आगे हाथ झुका के गुलाम बन के जीना पड़े. He says, I would rather not be living than to be in awe of such a thing. मैंने सीजर का गुलाम बन के जीने से अच्छा I will not be alive. He's saying, I was also born free. Caesar is also born free. Caesar has become now the most powerful man in Rome, and I am just an ordinary person. We both were fed equally. He says, हम लोग को दोनों को खाना दिया गया almost same, एक ही चक्की का आटा खाए. We both endured the cold winter and weather. He's saying, दोनों को ठंड लगता था. Then he goes on to narrate a story. He's saying, once upon a time, on a raw and gusty day, मतलब एक दिन बहुत तूफान आ रहा था. The troubled Tiber, chafing also, the Tiber नदी है रोम में, वहां बहुत waves आ रहा था पानी का. Caesar was saying, Cassius, can you leap in this angry water? Flood means water, waves. So Caesar challenged Cassius into the Tiber River, and he said, can you swim? Swim to that yonder, at that point. जैसे ही Caesar ने कहा, Cassius, accroted as he was, means dressed as he was, he plunged into the water. The moment Cassius heard Caesar's challenge, Cassius did not even open the dress. With the dress only, he jumped into the Tiber River and bade him follow. He says, come on, you follow. Let me see कि वहां तक कौन पहले पहुंचता है. So Caesar and Cassius, they started swimming as a race. So indeed he did. And the torrent road, when waves was very powerful. Torrent of waves was coming. Roar मतलब शेर चिल्लाता है वैसे waves was shouting very loudly, moving very up and down. We did buffet, मैंने fought with the lusty sinew means muscle. Caesar and Cassius, they were fighting against the wave, throwing aside the steaming waves. मतलब they were both swimming and throwing aside the water, waves, with the heart of controversy, as if the waves were fighting against Cassius and Julius Caesar, and they were having a controversy, having a fight. Before we could arrive to that point, इससे पहले कि वहां पहुंचते, waves में, torrential waves में बहुत fight हुआ. Cassius और Julius Caesar वहां पहुंचने का कोशिश कर रहे थे. इतने में Caesar डूबने लगा. Caesar said, "Help me, Cassius! I sink, Cassius, हमको बचा लो." Caesar started sinking. So as Aeneas, our great ancestral, did from the flames of Troy his shoulder. So Roman mythology में एक आदमी था Aeneas. He saved his father Anchises from the flame of Troy. Troy में एक war हुआ था. Troy is the name of a place. जहाँ एक Aeneas नाम का इंसान waves से अपने पापा को बचा के लाया था. ठीक वैसे ही Cassius will save Julius Caesar. Julius Caesar पानी में डूब रहा था, कैसियस उसको बचा लिया. ठीक वैसे ही बहुत हजार साल पहले माइथोलॉजिकल बुक में Aeneas saved his father Anchises.
आग लग गया था रोम में, and Anchises was dying. So his son Aeneas went and saved him. Similarly, as Anchises saved his ancestor from the flames of Troy, the old Anchises bear, so from the waves, Tiber did I tried when he saved Caesar. So he's saying कि जैसे एनियस ने एंचीज को आग से बचाया था रोमन में, जब ट्रॉय में जब आग लगा था, ठीक वैसे ही ट्राइबर के पानी में जब सीजर डूब रहा था तो कैसियस ने बचाया था. So Cassius is compared to Aeneas. Cassius is compared to Aeneas. और Julius Caesar is compared to Anchises, जो आग में जल रहे थे, यहाँ पानी है. और वहां माइथोलॉजी में ट्रॉय में आग लगा था और यहाँ टाइबर रिवर में पानी है. So he's saying Julius Caesar एक बार पानी में डूब रहा था, कैसियस ने बचाया. I did save him. And this man has now become God. He's saying Julius Caesar and I, Cassius, we both ate the same food. We both were exposed to same kind of weather, same situation, same geographical, socioeconomic condition. And this man, Julius Caesar, has become God. And now Cassius is a wretched creature. Wretched creature, it's like a slave, an unfortunate person. And I must bend his body. Cassius must bend his body to Julius Caesar. If Caesar carelessly not, Caesar इशारा करे तो हमको उधर जाना पड़े, ऐसा क्यों? So he's saying कि why should Caesar become so powerful? Why should Caesar become the emperor? Why should Caesar become the most powerful person in Rome? We were both brought up in the same situation. In fact, he was drowning. I saved him. So such a weak man, how could he become the king of Rome? Then he says, next incident. He says, once Julius Caesar had fever in Spain. They went for a battle और जूलियस सीजर को बुखार हो गया. He was on a feet, वो कांप रहा. I did mark him. His lips were shaking. कांप रहा था. He's saying ये जो भगवान बने बैठे हैं जूलियस सीजर, वो कांप रहे थे. The man who is worshipped now in Rome, he was shaking in Spain when he had fever. And his covered lips, the color fly, उसके चेहरे से normal color of lips उड़ गया था. And the same eye that bend of the world. और यही जूलियस सीजर जो अपने आंखों के इशारे से ऑर्डर देता है कि पूरा दुनिया को बदल रहा है अपने आंखों के इशारे से, यही आंख उस दिन it lost its luster, means it lost its normal color. So these powerful eyes of Julius Caesar, which is giving order to his subordinate, these very eyes, these very lips, which is giving order, now was actually without its normal color. It has lost its natural looks, natural luster. And he did groan, वो रो रहा था, Julius Caesar रो रहा था, Cassius बोल रहा है. And his tongue of that bed the Romans mark him. और ये आदमी जो अभी Julius Caesar लोगों को ऑर्डर दे रहा, this man who is giving order to others through his tongue, by shaking his lips, by through the movement of his eyes, these men, यही आदमी जो अभी लोगों को ऑर्डर दे रहा, यही उस वक्त कांप रहा था. इसके चेहरे से, इसके लिप से वो नॉर्मल कलर उड़ गया था. And give me some drink, Tithonus, Cassius बोल रहा. जूलियस सीजर ना रो रहा था और बोल रहा था मेरे सर्वेंट को थोड़ा वाइन मिलेगा प्लीज, give me some drink, Tithonus. Tithonus is a servant of Cassius. He was crying like a chukri, see girl. Here it's of course a gender bias comment, but I did not write the book. Shakespeare wrote it. So he is saying कि एक लड़की के तरह था. Of course that girl can be as brave as men, but this is Shakespeare's 16th century gender disparity, sexist comment. So he's saying Julius Caesar was crying like a sick child, chokri की तरह रो रहा था. ये God, it amazes me. He's saying भगवान हमको ये ताज्जुब लग रहा है. I'm surprised that man, Julius Caesar, who is so weak that cannot swim, who is so weak that he's crying in fever, who is so weak, जिसको एक बीमारी है, falling sickness, epilepsy, this kind of weak man with such feeble temper, इतना कमजोर इंसान, should get such a powerful position and should bear the palm alone. He should bear the palm alone, means he should have all the power. So it's saying कैसियस बोल रहा है कि जूलियस सीजर जो इतना कमजोर है, जूलियस सीजर जो लड़की की तरह कांप रहा था बुखार में स्पेन में और बोला तुमको वाइन मिलेगा प्लीज, जूलियस सीजर जो पानी में डूब रहा था, the man who is so weak, so feeble, so can this man, such a man of such weak strength, can become such a powerful man?
He's saying, I'm amazed that he has become such a power to start of the majestic world. में इतना रॉयल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावर जूलियस सीजर के पास है, जो इतना कमजोर है. इतने में फिर से ट्रम्पेट बजा. Brutus will another shouting. I do believe people are applauding Julius Caesar and giving some new honor to him. They're heaping on him. मतलब कोई जूलियस सीजर को कुछ दे रहा है, कि कोई एक क्राउन पहना दे रहा है, कोई फूल का माला पहना रहा है. So Brutus is saying there's another shout, and I believe these applauses, these praises are people are giving new honor to Julius Caesar. जूलियस सीजर को नया नया पोजीशन, कोई नया मतलब ऑनर, कोई गिफ्ट, कोई क्राउन दिया जा रहा है. कैसे सेइंग, व्हाई मैन ही बेस्ट्राइड द नैरो वर्ल्ड लाइक ए कोलोसस. तो रोम में एक बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह एक स्टैचू था, और उसका पैर ऐसे था, नीचे से शिप जाता था. ओके, इट वाज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिग, लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और लाइक इन इंडिया वी हैव सरदार वल्लभ भाई दैट स्टैचू. ओके, द मैन हू यूनाइटेड इंडिया, गुजरात वाला स्टैचू वैसे. सो ही इज सेइंग कि वी आर लाइक कॉमन पीपल. हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह. इतने बड़े सीजर, जो स्टैचू कोलोसस वाज द नेम ऑफ ए स्टैचू इन रोम. सीजर इज कंपेयर टू द स्टैचू, जो इतना बड़ा है, उसके नीचे हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं. He's saying he did bestride मतलब दोनों पैर पे से खड़ा, साइड करके खड़ा होना. So he's saying Caesar is like Colossus. He's standing so big, and we small men, petty men, walk under his leg and pop to find we are in the grave. He's saying वो इतना बड़ा हो गया और हम लोग इतने छोटे हो गए कि ऐसा लग रहा है we are in the grave, we are looking from the dishonorable grave, because we have made him so big and we have become unequal. Dishonorable because रोम में अब रिपब्लिकन सिस्टम नहीं रहेगा, रोम में डेमोक्रेसी नहीं रहेगा. तो दीज कॉमन पीपल और मेंबर ऑफ सेनेट, दे आर नाउ इन द ग्रेव. Men at times, so he's saying कि Caesar has become like a colossus, and we petty men, हम लोग छोटे छोटे इंसान, हम लोग इस पैर के नीचे चल रहे हैं, and peep about to find ourselves in these honorable graves. He's saying हम लोग का हालत ऐसे है जैसे कोई ग्रेव में सोया रहता है, वैसे है. Men at some time are masters of the fate. Dear Brutus, the fault is not in star but in ourselves. So Cassius is saying कि इंसान अपने किस्मत को खुद बनाता है, और गलती तारों सितारों में, कैप्रिकॉन जोडियक साइन में नहीं, हमारे अंदर. अगर जूलियस सीजर पावरफुल बना है तो ये गलती हम लोगों में है. कैसियस, कास्का, मेटलस सिम्बर, ऐसे लोगों में, ब्रूटस जैसे लोगों में. So it's a very famous line is saying, fault dear Brutus is not in stars but in ourselves. मतलब वो बोलते हैं ना, तुम्हारे राहु केतु शनि आ गया, सो यू आर इन ट्रबल. सो जूलियस सीजर में ये लाइन है कि हम लोगों का स्टार में कोई गलती नहीं होता, राहु केतु शनि के प्रॉब्लम से नहीं होते हैं. आवर ट्रबल इज बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉल्ट्स. जो शेक्सपियर इज सेइंग कि गलती लोगों के ज़ोडिएक साइन में नहीं, उनमें होता है. सो Elizabethan people believe, still people believe that because of some kind of stars, there is some trouble in somebody's life. So he's saying star में problem नहीं है, problem हमारे अंदर है. We are underlying, we have become slave, we have become inferior. Brutus and Caesar. What is that Caesar? He's saying Brutus और Caesar दोनों नाम लिए. Brutus, Caesar. Why should Caesar name be more important? Why should that name be shouted more? Caesar, 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 but not Brutus? He's saying Brutus का नाम ले तो भी अच्छा, Caesar का नाम ले तो भी अच्छा. तो ये Caesar का नाम इतना ज्यादा फेमस क्यों हो रहा है? Why is the name of Caesar shouted so much? Write them down. He's saying लिखो, Brutus, Caesar. He's saying दोनों नाम लिखा जाए, दोनों ही प्यारा लग रहा है, मीठा लग रहा है, स्वीट क्यूट लग रहा है. Write them down. Both of them are good names. Sound them. Brutus, Caesar. Both of them feel good to the mouth. दोनों नाम बोलने में अच्छे लग रहे हैं. Weigh them. बोल रहे अगर इन दोनों नाम का पर्सनैलिटी का पोजीशन देखा जाए, दोनों एक जैसे वैल्यू के हैं. Conjure them. उनके नाम को से मैजिक किया जाए. Both of them can bring a spirit ghost. अगर मैजिक किया जाए तो दोनों का नाम इक्वली पावरफुल है, दोनों से भूत आ सकते हैं, दोनों लिखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों बोलने में अच्छे लगते हैं, दोनों में सुनने में अच्छे लगते हैं. तो सीजर का नाम ब्रूटस से या बाकी सबसे ज्यादा क्यों होगा? ब्रूटस कैन ब्रिंग
द घोस्ट एंड सीजर के नाम से भी भूत आ सकता है. नाउ इन द नेम ऑफ गॉड, upon what meat does Caesar eat that he has become so powerful? ये बोल रहा है कि सीजर कौन सा मीट खाता है कि हम सब से ज्यादा पावरफुल सीजर हो गया. Why is he grown so great? He's saying कि हम लोग एक ही चक्की काटा खाते हैं. सीजर ब्रूटस नाम दोनों एक ही है, दोनों के नाम से भूत आएगा, दोनों बोलने से एक जैसा लगता है, दोनों का वैल्यू एक है, दोनों का वेट एक है, तो सब कुछ एक है. सो सीजर आखिर क्या खाता है that he has become so great? Age, what are you shamed? He's saying age is shameful है. एक वक्त था रोम में when people used to fight and they never allowed anybody to become the emperor. They always maintained democracy and republican system of governance. आज ऐसा दिन आ गया है, रोम you are ashamed. He's saying age ही shameful है. रोम you have lost the bread of noble people. He's saying रोम, तुम्हारे अंदर जो अच्छे पैट्रियोटिक लोग थे सब चले गए. Was there age? बोल रहे एक वक्त था रोम में. Since the great flood, आया, उसके बाद से एक वक्त था, it was famous था that no man ever ruled Rome. एक आदमी को कभी भी रोम में किंग बनाया नहीं दिया जाता था. Rome was always ruled by democratic system. It was always ruled by voting. Democracy, republican government था. He's saying कि रोम में कभी भी एक आदमी को पावर मिला था. What could they say who talked of Rome? He's saying लोग क्या कहेंगे रोम के बारे में कि रोम is encompassing surrounding only one man. मैंने रोम में सिर्फ एक आदमी को इतना महान बना दिया गया. Now it is Rome indeed room enough only for one man. He's saying Rome अब इतना छोटा हो गया है, इतना तुच्छ हो गया, inferior हो गया, that nobody is fighting against man who is trying to become the king, who is trying to become a dictator, who is trying to become a corrupt kind of politician, who is trying to rule over whole Rome. He's saying एक वक्त था जब रोम फेमस था for democracy. Rome was famous for being a republican system of governance. Rome was famous for giving value to every citizen. Now Rome will only give value to one person. Its wide wall, मतलब रोम के चारों तरफ जो दीवार थे, ये सिर्फ अब एक आदमी का गुणगान गाएंगे. Now is it Rome indeed only room for one man? क्या रोम में अब एक आदमी का याव भगत होगा? When there is but only one man, क्या रोम में सिर्फ एक आदमी का पूजा होगा? Oh, you and I have heard our fathers say that there was a Brutus. ये Brutus नहीं, Brutus के फैमिली में कोई Brutus ancestral में. They saying हम लोग अपने पेरेंट्स से सुने हैं कि एक Brutus था पहले, Brutus के खानदान में, who fought against the enemy. The eternal devil has to keep the state as easily as a king. जैसे वो Brutus के फोर फादर लोग कभी भी डेविल को रूल करने नहीं देंगे, वो वैसे ही वो कभी भी किंग को रूल करने नहीं दिए. They always either kill the king and converted that power into democracy. So there was a Brutus. Brutus के खानदान में कोई और Brutus था, Brutus सरनेम वाले Brutus, who once brooked the eternal devil. मतलब वो लोग लड़ते थे और कभी भी कोई किंग को रूल करने नहीं देते थे. वो डेविल को अलाउ कर देंगे, मतलब ना वो डेविल को अलाउ करेंगे और ना कभी वो किंग को अलाउ करेंगे. They will not allow anybody to become the king of Rome. He's saying कि एक वक्त था रोम में जब रोम के लोग लड़ के भीड़ के जान दे के कभी भी एक इंसान को किंग बनने नहीं देते थे. वो जान दे देंगे, डेविल को अलाउ कर देंगे, बट दे विल नॉट अलाउ वन पर्सन टू बिकम द किंग ऑफ रोम. और अभी हाल ऐसा आ गया है कि रोम इज ओनली एनकम्पासिंग वन मैन, रोम इज ओनली वर्शिपिंग वन मैन, रोम इज ओनली सुटेबल फॉर वन मैन. सो कैसियस इज अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ बीइंग ए किंग. मोनार्की के अगेंस्ट है, एम्पेरर बनाने के अगेंस्ट में. ब्रूटस भी अगेंस्ट में है. That you do love me, I'm not jealous. Brutus is saying कि तुम हमसे सच में बहुत मेरे affection रखते हो, ये हमको पता है. I'm not doubting it, I'm not jealous. What you would work me to have some aim. Brutus is saying तुम जो बोलना चाहते हो हम समझ रहे हैं. But I have some thought of this. बोल रहा हूँ इसके बारे में कुछ सोचे और आजकल इस टाइम के बारे में मैंने कुछ सोचा है. I will recount you thereafter. I will tell you thereafter. बाद में बताएंगे. So Brutus is saying that Cassius, you love me, I know. I'm not jealous of it. I'm not doubtful of it. And you want to tell me something. I have some aim. I have some idea. I have thought about this. मैंने इसके बारे में और इस टाइम के बारे में सोचा. I will tell you there afterward. For this present, I would not so with love entreat you. So he's saying कि I am requesting you. Be not furthermore. But अभी तुम ज़्यादा चिंतित मत हो, disturbed मत हो, tensed मत हो. What you have said, I will consider. He's saying जो तुमने कहा है मैं उसके बारे में सोचूंगा. I'll think about it and I find a time.
मीट टू हियर एंड आंसर समथिंग, देन ही इज सेइंग कि मैं तुमसे एक फ्री टाइम में मीट करके आई विल हियर एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, टिल देन माय नोबल फ्रेंड च्यू अपॉन दिस, बोल रहा तब तक ये तुम चबाते रहो, इस बात पे सोचते रहो, इस बात पे विचार करो। क्या? ब्रूटस वुड रादर बी अ विलेजर देन टू रिप्यूट हिमसेल्फ एज ए सन ऑफ रोम, ही सेइंग कि मैं गांव चला जाऊंगा रादर देन बीइंग ए मेंबर ऑफ सेनेट, बट आई विल नॉट अलाउ वन मैन टू बिकम पावरफुल under this hard condition are these to likely lay upon. He's saying कि अगर कुछ बुरा हुआ, as a difficult time, he's saying something is going to happen. Brutus is saying, I will rather leave everything, leave this Senate, leave this parliament, and I will become a common person, but I will not allow anything danger to happen to my beloved country, Rome. He's saying, instead of to be reputed as a member of Rome, member of Senate of Rome, अंडर दिस हार्ड कंडीशन एज दिस इज टू ले अपॉन, बोल रहे ऐसा मुश्किल वक्त में जो होने जा रहा है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम विलेजर बन जाएंगे रादर देन बीइंग ए रोमन, रादर देन बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बोलना चाह रहा है कि अगर रोम पे कुछ खतरा आया तो मैं अपना वो पोजीशन, ताज पोजीशन, एमएलए का, मैंने समझाने के लिए एमएलए एमपी का पोजीशन, सेनेट का पोजीशन छोड़ दूंगा, एक कॉमन विलेजर बन जाऊंगा, लेकिन आई विल नॉट अलाउ this hard thing to happen, negative things to happen to my beloved country, Rome. Cassius, I'm glad my weak words have sparked some fire in you. Cassius बोल रहा, हमको बहुत खुशी है कि मैंने जो आपको बताया, आपके दिल में उस बात में कुछ असर किया है. Cassius saying, I'm so happy that my words have created some influence in your mind. I'm glad my weak words have struck some fire in you. तो saying मेरे चिंगारी ने आपके दिल में एक आग भड़काया, इसके लिए बहुत खुश है. The games are done and Caesar is returning. इतने में चिल्ला चिल्ली हो रहा है, उधर से सीजर वापस आया after the feast of Lupercal celebration. As they pass, Cassius saying to Brutus, pull Casca by the sleeve. उन्हें Casca जब उधर से रेस में जाएगा उसको स्लीव से टानना, and he will after his fashion जैसे उसका habit है, he will tell you कि feast of Lupercal में क्या क्या हुआ. तो सब लोग सीजर के साथ जा रहे थे, तो ब्रूटस कास्का को टान के साइड में ले आए. I will do so. But you look Cassius, the angry spot on Caesar's brow. इतने में लोग सीजर को जाते देखे, सीजर बहुत चिंतित गुस्सा में थे. And the rest are like children and rest are like scolded students, scolded followers. Brutus is saying, सीजर को देखो कितना गुस्सा में, बाकी लोग देखो कैसे डरे डरे बच्चों की तरह है. कैलिफोर्निया सीजर की बीवी वो एकदम डिस्टर्ब है. Caesarius looking with such fret and red eyes, disturbed eyes, fiery eyes, as we have seen in Capitol being crossed and confronted by some senator. He is saying Caesar तो ऐसे ही चिंतित है जैसे वो आर्गुमेंट करते हैं पार्लियामेंट में. Cassius saying, कास्का टेल अस, क्या वो लोग कास्का को बुला लिए भीड़ से. तो Cassius is asking कास्का, कास्का टेल अस व्हाट इज द मैटर. Caesar is calling Antony. Caesar ना Cassius को देख के ही बोल रहे हैं. Caesar is looking at Cassius and is saying, let me have men about me who are fat. As Caesar is saying, हमको मोटे मोटे लोग पसंद है, ये टिंग के पतले होम्योपैथी के सीसी की तरह लोग अच्छे नहीं. स्लीक हेडेड मैन, मतलब जो इंसान एकदम ऐसे स्लीक बाल को कैसे चिपका के रहता है, वो स्लीप एट नाइट, जो अच्छे खासा रात को बहुत ज्यादा सोते हैं. And that Cassius has a lean and hungry look, मतलब उसको देख के लगता है हमेशा भूखा है, hungry है. He thinks too much. These men are dangerous. Caesar is saying to Antony, Antony, वो लोग जो पतले दुबले होते हैं, ज्यादा सोते हैं, जो hungry, उनके चेहरे पे एक lean और hungry look होता है, मतलब जो बहुत दुबले पतले होते हैं, ऐसा लगता है भूखे हैं, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं. Antony is saying, fear him not. Antony is saying, नहीं सर, Cassius अपना ही आदमी है, डरिए मत. He is a noble Roman and well given. हम लोग इसको, मतलब we have tested him. He is not dangerous. Caesar is saying, would he were fatter, I would have trusted him. Caesar बोल रहा है कि अगर कैसियस थोड़ा मोटू होता ना तो हम विश्वास कर लेते, इतना टिंके लोगों पे हम विश्वास नहीं कर पाते. Caesar is saying, if he were fatter, I would have trusted him, but I fear him not. मतलब हमको उससे डर नहीं है. For my name is not liable to fear. बोल रहा मेरा नाम, हम तो सबसे पावरफुल है, हम किसी से क्यों डरे. I do not know the man I should avoid as to spare Cassius. बोल रहा हम डरते नहीं है, लेकिन अगर हमको किसी को अवॉइड करना पड़ा तो हम सबसे पहले कैसियस को ही अवॉइड करेंगे. He reads too much. बहुत पढ़ाकू है.
सीजर इज सेइंग कैसियस बहुत पढ़ाकू है, सब चीजों को ऑब्जर्व करते रहता है. He looks quite to the deeds of men. वो लोगों के काम काज पे बहुत ध्यान देता है. He loves no plays, और वो प्ले वाले ड्रामा और भी नहीं देखता. उस जमाने में दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंड यू एंटोनियो, ही नेवर एंजॉय म्यूजिक. उसको म्यूजिक भी पसंद नहीं है, वो हंसता भी नहीं है. और अभी हंसता भी तो ऐसा है एज इफ इज मॉकिंग हिमसेल्फ. ही कुड नॉट बी मूव टू स्माइल एट एनीथिंग. मैंने कुछ भी बोलो, जोक बोलो, कॉमेडी करो, ही नेवर स्माइल्स. सीजर इज सेइंग सच मैन आर डेंजरस. जो लोग म्यूजिक नहीं सुनते, जो लोग प्ले नहीं देखते, जो लोग हंसते नहीं, और हंसते भी तो ऐसे जैसे कि मजाक ही उड़ा रहे हैं. सच मैन आर नेवर एट होम. उनको कभी भी दिल में इत्मीनान नहीं है, वो कभी भी पीसफुल नहीं है. while they behold a greater than themselves, they therefore are dangerous. He is saying कि ऐसे लोग बहुत ही dangerous हैं. Such kind of people are very dangerous. I would rather tell thee what is to be feared than what I fear. He is saying कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको इससे डर लगता है, हम ये बोल रहे हैं कि ये भयानक चीज है. Because I am Caesar and Caesar is not afraid. He is saying such men are dangerous. He is saying I am not telling you that I am afraid of Cassius. I am saying that these kind of people should be avoided, should be feared. Because I am Caesar and Caesar cannot be afraid of anything. Now Caesar is saying to Antony, Antony, come to my right hand. While my ear is deaf. Well, ये कान थोड़ा कम सुनाई देता, इधर आ. Tell me truly, what you think of him. सब लोग चले गए, सीजर भी चला गया. सीजर के फॉलोअर्स लोग सीजर के साथ चले गए. कास्का is saying to these people, you pulled me by the clock, do you want to speak with me? He said, तुमने मेरा हाथ टाना, कुछ बोलना चाहते हो? Yes, Casca, tell us what has happened today, and why did Caesar look so sad? So Cassius, Brutus, they're asking Casca, बताओ आज क्या हुआ प्लीज सब लोग पर कल में, और तुम और बाकी लोग और सीजर इतने चिंतित क्यों हैं? Casca saying, you were not with him, were you not? Casca बोले, तुमको नहीं पता, तुम नहीं थे. Brutus saying, if I would be with you, I'd not ask you. He's saying, I should not have asked you, Casca, if I was there. Brutus saying, अगर होते तो पूछते क्यों? There was a crown offered to him. Casca is saying कि सीजर को एक crown दिया गया, एक राज crown दिया गया. Being offered him the crown, he put it by the back of his hand. Crown दिया गया, वो वापस कर दिया. And people started shouting, Caesar, 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 where the crown? तो बेटे सिंह दोबारा साउंड हुआ, वो किसके लिए? कास्का बोला उसी के लिए, क्राउन पहनाने के लिए. कैसे सिंह एक बार थर्ड टाइम साउंड हुआ था, वो किसके लिए? Why was the third cry for? He's saying for the same thing. Was the crown offered him thrice? बेटे सिंह कि तीसरा बार क्राउन उसको दिया गया. कास्का is saying yes. He put it by the thrice. दिया गया, तीसरा बार भी वो हटा दिया. Every time gentler than the other. मतलब हर बार दिया गया, फिर वो क्राउन में नहीं, क्राउन को किंग क्राउन नहीं पहनना, क्राउन नहीं पहनना. And everybody started shouting, Caesar, Caesar. जहाँ कास्का खड़ा था, इस नेबर मतलब आसपास के लोग वो चिल्लाने लगे. Was the crown offered him? Who was the person who offered him the crown? कैसे बोल रहा, किस ये क्राउन जूलियस सीजर को किसने दिया था? कास्का is saying Antony gave him. Brutus saying, tell me the manner. मैंने हम लोग डिटेल्स बताओ कि सीजर जब क्राउन रिजेक्ट कर रहे थे तो कैसा लग रहा था, कि मतलब how was he behaving? Casca, I can as well be hanged as tell the manner of it. Casca is saying कि हम बताएंगे तो मेरा फांसी हो जाएगा. It was, he's joking. He's saying it was a foolery. I did mark it. I saw Mark Antony. बोल रहे एक तो बेवकूफी, एक तो गेम जैसा था. सीजर उसको क्राउन पहना रहा था, और सीजर मतलब सॉरी एंटनी was giving crown to the Caesar, and Caesar was saying, no, I'll not take it. I'll not take it. Actually, it was not a crown. It was one of the small crown called coronet. He put it by once, and to my thinking would have fain had it. Casca is saying कि हमको लग रहा था सीजर को क्राउन पहनना था, लेकिन वो बोला तो नहीं. अरे नहीं, क्राउन का क्या, क्राउन नहीं क्राउन. But he was actually willing to have it. By then he was offered again. सीजर को दोबारा क्राउन दिया गया, फिर दोबारा क्राउन को रिजेक्ट कर दिया. He was loath to lay his finger on it, and he was not willing to have his hand on the crown.
And then he was offered third time. Again he did the same thing. Again he rejected it. And the rebellion, common people started shouting, clapping, who, Caesar, Caesar. Common people लोग चिल्ला रहे थे, Caesar उनको खुश करने के लिए अकॉर्डिंग टू कास्का क्राउन को रिजेक्ट कर रहा था. They were shouting and they threw up the nighty cap. और रात को कैप पहन के और लोग सोते, वो अब नाइट कैप वो लोग ऐसे फेंकने लगे खुश होके. एंड इट वाज गिविंग आउट वेरी बैड ब्रेथ. जितना बार सीजर रिफ्यूज कर रहे थे क्राउन, पब्लिक उतना चिल्ला रहा था. और इट साउंडेड एंड फेल डाउन. सीजर इज सेइंग कि वो बेहोश हो. ये सब होते होते सीजर को अचानक एक दौरा पड़ गया, एपिलेप्सी का, फॉलिंग सिकनेस. सो ही फेल डाउन. For my own part, I dare not laugh for fear. कैसे सिंह को हंसी आ रहा था लेकिन हम हंस नहीं रहे थे, क्योंकि हंसने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा. और आसपास के वो लोग तो कैप फेंक रहे थे, जो गंदा महक रहा था मेरे मुंह में चला जाता. कैसे सिंह, आई प्रे यू टेल मी वंस मोर. सीजर साउंड, मतलब सीजर बेहोश हो गया, उनके मुंह से झाग निकल रहा था. Casca is saying yes, he fell in the marketplace. मतलब जिस मार्केट प्लेस में वो गिर गए, उनके मुंह से फोम झाग निकल रहा था. And he was speechless. ब्रूटस से हाँ हाँ, सीजर को हमने सुना है, सीजर को एक फॉलिंग सिकनेस है. फॉलिंग सिकनेस में काइंड ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा आता है उनको. कैसियस, नो सीजर इज, कैसियस बोल रहा नहीं नहीं, बीमारी जूलियस सीजर में नहीं, बीमारी हमारे अंदर है कि हमने ऐसे एक बीमार इंसान को रोम का सबसे पावरफुल मैन बना दिया है. So Cassius is saying the sickness is not in Julius Caesar, the sickness is in you and me, Casca. We have falling sickness, means we are falling as a slave to the great Julius Caesar. बीमारी हमारे अंदर है कि हम गुलाम बन रहे, बीमारी Julius Caesar के अंदर नहीं है. वैसे Julius Caesar के अंदर है. He is saying in a poetic tone, मेटाफोरिकल टोन. मतलब ऑफ कोर्स जूलियस सीजर को एक बीमारी है, एपिलेप्सी, फॉलिंग सिकनेस. लेकिन कैसियस यहाँ लोगों को प्रवोक करने के लिए बोल रहा है, बीमारी जूलियस सीजर के अंदर नहीं, हमारे अंदर है कि हम लोग एक इंसान के गुलाम बनने के लिए, स्लेव बनने के लिए तैयार है. If the ragtag people did clap him and hiss him, अगर कॉमन पीपल लोग ओके क्लैप कर रहे थे, ओके चिल्ला रहे थे, प्लीज, कभी कोई प्लीज हो रहा था, कभी वो डिसप्लीज हो रहे थे, एज मतलब ही वाज एक रिएक्टिंग एज रोमन एक्टर्स डू. मतलब रोमन में बहुत सारा प्ले होता था, तो एक्टर लोगों के हिसाब से उनको प्लीज और डिसप्लीज के ध्यान रखते एक्टिंग कर रहा था. हियर कैसियस इज ट्राइंग टू से that whatever Julius Caesar was doing, he was acting. He was not doing it sincerely. He was rejecting the crown, but he was rejecting the crown just to get the affection of people, just to win the heart of people. He was pretending not to have the desire for the crown, but he actually had it. So he's saying, कास्का बोल रहा है, हमको लग रहा है कि सीजर ना रोमन एक्टर लोग के तो एक्टिंग कर रहे थे, सच्चे नहीं थे, सिंसियर नहीं थे. बुटा सिंह, अच्छा जब वो होश में आए, बेहोश हो गए थे, मुंह से झाग निकल रहा था, फिर जब वो होश में आए तो क्या हुआ? मैरी, बिफोर ही फेल डाउन, ही परसीव्ड द कॉमन हर्ट वाज, ही रिफ्यूज्ड. सो जब वो होश में आए, ही प्लक्ड मी ओपन हिज डबलेट एंड ऑफर्ड द थ्रोट टू कट. ही सेइंग, कॉमन लोगों को बोले कि ये मेरा थ्रोट काट दीजिए, आप लोग ये लीजिए, मेरा चेस्ट काट दीजिए, बट आई विल नॉट वेयर द क्राउन. I had been a man of any occupation I'd have taken. So Casca is saying कि हम तो मेंबर ऑफ सेनेट है, अगर हम कॉमन मैन होते तो सीजर का सच में काट ही देते. I'd have go and have gone to hell for along with these criminals. So सीजर जब होश में आए तो बोले, फिर से लोगों ने बोला क्राउन पहन लीजिए. तो इससे कि आप लोग मेरा गला काट दीजिए, मेरा चेस्ट काट दीजिए, लेकिन हम क्राउन नहीं पहन सकते. He opened his doublet, मतलब kind of coat, and he offered them to cut his throat. He is saying कि अगर हम कोई आम आदमी होते तो सीजर जब बोल रहे थे कि क्या आप कोई मेरा गला काट, तो हम काट ही देते, एंड आई माइट गो टू हेल फॉर डूइंग दिस अलोंग विद द क्रिमिनल. सो ही फेल, फिर वो बेहोश हो गए. जब वो फिर से होश में आए, he had done so, he saying सॉरी, अगर हमसे कोई गलती हो गया बोलने में और सुनने में तो हमको माफ कर दीजिएगा. Okay, he desired to worship, to think it was his infirmity and a weakness. He said कि आप लोग प्लीज मेरा ये वीकनेस समझ के हम बार बार बेहोश हो जा रहे, पता नहीं क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, आप लोग हमको माफ कर दीजिए. तो 3-4 लड़की लोग वेंसेस में गर्ल, वो लोग चिल्ला के बोली, अल्लाह गुड सीजर, वी फॉरगिव यू विथ माय आवर हार्ट. 3-4 लड़की लोग बोली, सीजर सीजर कितना अच्छा, हम लोग अब दिल से माफ कर दिए. कास्का बोल रहा, बट देयर इज नो हीट पेड टू देम. If Caesar had stabbed their mother, they would have done no less. So Casca is saying कि कॉमन पब्लिक लोग इतने बेवकूफ होते हैं
कि अगर सीजर उनकी मम्मी को मार देता तो भी वो लोग फॉरगिव कर दिए, सीजर मार्केट के में बेहोश हो गया तो भी वो लोग फॉरगिव कर दिए. दिस कॉमन पीपल अकॉर्डिंग टू कास्का has no idea of their own. They are very fickle minded. They do not have their own loyalty to any idea. So कास्का is saying कि कॉमन लोग सीजर को माफ कर दिए, लेकिन अगर अगर सीजर ने उनके मम्मी का मर्डर भी किया था तो भी वो माफी कर देते. ब्रूटस इज आस्किंग, अच्छा जब तो वो आफ्टर दैट ही बिकेम सैड, व्हाई? ब्रूटस बोल रहा, अच्छा सीजर उदास क्यों हो गए? कास्का इज सेइंग, यस, डिड सीजर से एनीथिंग? कैसियस इज सेइंग, क्या सीजर ने कुछ कहा? कास्का इज सेइंग, यस ही स्पोक ग्रीक, टू व्हाट इफेक्ट? कैसे, तो उसका फायदा क्या हुआ ये ग्रीक बोलने का? Casca is saying, I can tell you, I never look on in the face, but those that understood him and smiled at him and shook his head. Casca is saying, वो क्या लैंग्वेज बोल रहा था, किस टोन में बोल रहा था, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो लोग उसको समझ रहे थे वो मुंडी हिला रहे थे. बट फॉर माई पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी, मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट. ये रोम में लोग रहते हैं और ग्रीक उनको समझ में नहीं आता. इज ट्राइंग टू से उनको कुछ समझ में नहीं आया. जो लोग समझ रहे थे, दे वर शेकिंग देयर हेड. I could tell you more news. Marulus and Flavius were pulling the scarf आर पुट टू साइलेंस, मतलब उन लोग को जेल हो गया है या उन लोग को रोक दिया गया है या शायद मार दिया गया है. पुट टू साइलेंस मीन दे मेड टू क्वाइट. फ्लैबियस एंड मैरुलस एक्ट वन सीन वन में जो लोग सीजर को सेलिब्रेट कर रहे थे उसके विक्ट्री को, तो वो लोग रोक रहे थे, तो सीजर के लोगों ने फ्लैबियस और मैरुलस को चुप करा दिया. फेयर यू वेल, दे आर मोर फुलरी येट बट आई कुड रिमेम्बर दिस. मतलब ऐसे बहुत सारा गेम वम हुआ, बहुत सारा मस्ती हुआ, लेकिन ये हमको याद है. Cassius is saying to Casca, will you sup and will you have dinner with me tonight? Casca is saying, no, I've already promised somebody. कहीं मेरा और ही दावत है, मैंने उसको वादा कर दिया. And will you dine with me tomorrow? Cassius is saying to, तो next दिन तुम मेरे पास डिनर पे आओगे? He's saying, yes, अगर हम जिंदा रहें और तुम दावत दिए और तुम्हारा खाना टेस्टी हुआ तो वेलकम. He's saying, okay, good night, I will expect you. Casca is saying, fair you, exit. उन्हें वो कास्का चला गया. Brutus is saying, what a blunt fellow is this man. Brutus is saying, कास्का कितना डल हो गया है. He was very quick metal. ये बहुत, जब स्कूल में पढ़ते थे हम लोग तो बहुत एनर्जेटिक था, बहुत शार्प था, अभी कैसा ब्लंट हो गया. So he now is in execution of any bold and novel enterprise. कैसे बोल रहा, हाँ, अगर इसको काम दिया जाए तो ये आज भी एनर्जेटिक है, ये आज भी बहुत ही अच्छा से काम कर सकता है. However, he puts in a tardy form. इसे जैसा रफ बिहेव करता है, रूड जैसा, वियर्ड जैसा, बट इज रूडनेस इज सॉस टू गुड विट. मतलब ये ऐसे रूड बिहेव करता है बट ये है बहुत इंटेलिजेंट, खासकर सच विच गिव्स मैन स्टमक टू डाइजेस्ट हिज वर्ड्स. इज सेइंग कि ऐसे ड्रामा कर करके बोलता है तो इसके बाद को लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो यहाँ हम लोगों को पता चला ये 5 लाइन में अबाउट द कैरेक्टर ऑफ Casca. Casca जो है, he might behave rough and rude, but if he is given some kind of work, if he is given some kind of activity, some kind of task, then he becomes very active. And he behaves in this way so that whatever he is saying can be easily digested to common people. So Brutus is saying, ठीक है, so it be, what time I will leave you, saying, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं. Tomorrow, if you please speak with me, I will come to your home. He says, ठीक है, हम तुम्हारे घर आएंगे, कल बात करेंगे. If you will come to my home, बोल रहे तो तुम मेरे घर आ जाना या तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा. We'll talk tomorrow. कैसे saying, so will I think of the world. बोल हम जो बोले दुनिया के बारे में सोचना. Exit Brutus. Brutus चला गया. अब कैसे स्टेज में सिर्फ अकेले है. He's talking to himself and the audience can listen. So Cassius is talking to himself. He's saying, well, Brutus, you are noble. Well, Brutus, तुम बहुत ही ईमानदार. And I see the honorable matter can be brought to dispose. He's saying कि तुम honorable हो और तुम्हारा ये honorable idea को ही manipulate किया जा सकता है, use किया जा सकता है, उसको इस्तेमाल में लगाया जा सकता है. Therefore, it is me, the honorable mind keeps with the light. He's saying कि तुम honorable हो और वो अपने आप को भी honorable बोल रहा है. So he's saying कि noble man को noble man के साथ ही रहना चाहिए. और who's so firm that cannot be seduced? He's saying कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको seduce, यहाँ मतलब है जिसका माइंड को चेंज ना किया जा सकता, चाहे वो मार्कस ब्रूटस ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो. सीजर दैट वियर मी हार्ड. कैसियस से सही कि सीजर हमको देख नहीं पाता. ही हैज सम ग्रज अगेंस्ट मी.
but he loves Brutus. If I were Brutus and he were Cassius, he should not humor me. He's saying कि मेरे जगह कैसियस की जगह ब्रूटस होता, ब्रूटस की जगह कैसियस होता, तो वो हमको चेंज नहीं कर पाता. आई विल दिस नाइट. सो कैसियस डिसाइड ये क्या करेगा आज रात को, बहुत सारे हैंड राइटिंग में बहुत सारा लेटर लिखेगा कैसियस एट दिस विंडो थ्रो, और ब्रूटस के विंडो में लेके फेंक देगा. It will appear as if they have come from different citizens, writing all tending to this great opinion that Rome holds of his name. और सब लेटर में ये लिखा रहेगा कि सब लोग ब्रूटस को रोमन का अच्छा सिटीजन समझते हैं, एक पैट्रियोटिक सिटीजन समझते हैं, एक सेवियर समझते हैं. वेयर इन ऑब्सक्योरली मैंने इनडायरेक्टली सीजर एम्बिशन विल बी मेंशन, मैंने इनडायरेक्टली सीजर का ग्रेटनेस मेंशन होगा. एंड आफ्टर दिस लेट सीजर सेट हिम स्टीयर. उसके बाद बोल रहा है फिर सीजर का मतलब प्रॉब्लम मैंने बढ़ जाएगा. तो कैसियस डिसाइड्स दैट ही विल राइट different letters with different handwritings, and he will throw all those letters at the window of in the room of Brutus. And उसमें लिखा रहेगा कि how Roman people respect him, और इनडायरेक्टली लिखा रहेगा कि सीजर के एम्बिशन से कितना रोम को खतरा है. फिर सीजर विल बी इन प्रॉब्लम, ही विल बी शेकन. अगर सीजर को नहीं हटाया गया तो कैसे सेइंग बुरा दिन आने वाला है. लेट मी रिवाइज द लास्ट पार्ट वंस. कैसियस इज सेइंग टू हिमसेल्फ, ही इज सेइंग ब्रूटस बहुत ऑनरेबल मैन है, और ये ऑनरेबल मैन को कैसियस इज सेइंग मैं अपने तरह से इस्तेमाल कर पाऊंगा. इज सेइंग कि अच्छे लोगों को देयरफॉर इट इज मीट मैंने नेसेसरी नोबल माइंड शुड बी विद नोबल माइंड. अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए. यानी सेइंग को ये दुनिया में ऐसा है जो इतना डिटरमाइंड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, और किसी को चेंज किया जा सकता है. सीजर बियर मी हार्ट. कैसियस इज सेइंग सीजर को हमसे बहुत नफरत है, कैसियस से सीजर को बहुत नफरत है. बट ही लव्स ब्रूटस. ही सेइंग लेकिन ब्रूटस से उसको प्यार है. बोल रहा इफ आई वेर ब्रूटस नाउ एंड ही वेर कैसियस ही शुड नॉट ह्यूमर मी. बोल रहा मेरे जगह ब्रूटस और ब्रूटस की जगह कैसियस होता तो वो देख वो चेंज नहीं कर पाता. मैंने यू नॉट मतलब एंटरटेन मी. मैंने बोलना चाह रहा है कि मेरा बात मतलब जूलियस सीजर का के आगे ब्रूटस का चलता है, लेकिन कैसियस का तो नहीं चलता है. अगर कैसियस कुछ बोलेगा जूलियस सीजर को, जूलियस सीजर विल नेवर लिसन, बट ब्रूटस के बाद लोग बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं. तो इसे वेरियस हैंड राइटिंग से, अलग अलग हैंड राइटिंग से he will write letters and throw it at the into the room of Brutus. It will appear as if they are coming from several citizens. ऐसा लगेगा अलग अलग लोग लिखे हैं. राइटिंग ऑल टेंडिंग टू द ग्रेट ओपिनियन, मतलब सब में ये लिखा रहेगा कि जूलियस सीजर कितना मतलब डेंजर है, और रोम खतरे में है, और रोम को बचाने के लिए रोम को बचाने के लिए रोम को बचाने के लिए ब्रूटस को कुछ करना पड़ेगा. एंड देन ही सेइंग तब तो सीजर जरूर हिल जाएगा, और सीजर नहीं हिला तो हम लोगों के लिए बहुत डेंजर दिन आने वाला है. So if you found this video of any use, please do share it with your friends, like it and subscribe the channel. Thank you for watching the video.